So this is the question number 6 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic stacks in Python. So in this particular question, it has been asked if in a stack, if we try to remove an element from empty stack, what is this particular condition is called? So the right answer would be the underflow condition. देखिए अगर मैं बात करूं स्टैक की तो स्टैक के अंदर हमारे पास दो मेजर ऑपरेशन है. फर्स्ट वन इज पुश, अनदर वन इज पॉप. नाउ पुश एंड पॉप के अंदर हमारी एक स्पेशल कंडीशन अराइज होती है. अगर पुश करते टाइम हमारा स्टैक ऑलरेडी फुल है, अगर हमारा स्टैक ऑलरेडी फुल है एंड यू स्टिल ट्राइंग टू पुश द वैल्यूज इनटू इट, तो दिस विल रिजल्ट इनटू ओवरफ्लो कंडीशन. यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि अगर हमारे पास कोई ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आपने पूरा वाटर फिल कर दिया एंड यू स्टिल यू आर ट्राइंग टू pour सम वाटर इनटू इट, तो उस केस में क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी? ओवरफ्लो. सिमिलरली पॉप के केस में क्या है, अगर आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, ठीक है, एंड यू स्टिल ट्राइंग टू रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम इट, तो दिस विल रिजल्ट इनटू अंडरफ्लो कंडीशन. तो हमारे दो मेजर ऑपरेशन कौन कौन से हो गए? पुश एंड पॉप. और उसी पुश एंड पॉप के अंदर हमारी रेस्पेक्टिवली डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती हैं. ओवरफ्लो कब आती है? जब स्टैक ऑलरेडी फुल है एंड स्टिल यू ट्राइंग टू पुश द वैल्यू. एंड अंडरफ्लो कब आती है? जब स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी एंड यू स्टिल ट्राइंग टू रिट्रीव सम वैल्यूज आउट ऑफ पर्टिकुलर स्टैक. Hence, for this one, option number C is the correct one. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.